Hello students, today we will start with the numericals of capacitors and this is the simple circuit. You will solve more complicated circuit, and the problem of these numericals are they create a lot of confusion in the mind of students. Students are remained confused that in which part of the circuit they have to apply series combination, in which part of the circuit they have to apply parallel combination. For that we will start with a method. You will follow that method in every question, and that method will ensure that you will find the right answer of the numerical. So that method is, this is A point, this is B point. You are going to calculate C equivalent, means equivalent capacitance, C equivalent between A and B. That means charge is flowing from A, and after flowing through entire circuit it reaches to B. Either it is flowing from B and goes to A. You can take any of the situation, your answer will be correct. So I will take it as that charge is flowing from A, it is flowing from here, and is at this point it is having two paths. Now that charge will get divided in two parts from this point, and at the point where the charge gets divided is called a junction. It is called junction. I will name it as junction J1. Okay. Now after this junction, it is having, the charge will have two paths. One path is this and another path is this, and the individual paths are known as branches. So we are having two branches, one branch is this and another branch is this, and after flowing through all the elements, the charge gets combined at a point. Again, this point is also called junction, and this is called J2, and after this charge will move out. So we are going to calculate the capacitance between two junctions. दो जंक्शन के बीच का आपको कैपेसिटेंस निकालना है. You are having two branches, one branch is this and one branch is this. If you look at this branch individually, then in this branch charge is not going to divide anywhere. Charge is not getting divided. If charge is not getting divided, then means these capacitors are in series combination. If they are in series combination, then you will apply the formula of series combination and you will find the answer. Okay, so I will write down it that capacitors C1, C2 and C3 are in series combination. Series combination. So now C net of this branch, net capacitance of this branch will be 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So 1 by C net is equal to 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3, and I will later on I will put the value of microfarad, that is 10 to the power minus 6. So I will get the value 1 by 3, LCM will be 3, and in numerator I will get 3, so it will be having value 1. That means net capacitance of this combination is 1 microfarad. Now, so in place of these three capacitors, I found a capacitor which is having equivalent capacitance of 1 microfarad. That means I will remove rest of the capacitors and one capacitor is left which is having capacitance. I will name it as C net is equal to 1 microfarad. Now you are left with two capacitors only. दो ही कैपेसिटर बचे हुए हैं. ठीक है.
तो दो कैपेसिटर आपके पास बचे हैं, दो ब्रांचेस हैं, दोनों कैपेसिटर्स में चार्ज डिवाइड, मतलब दो ब्रांचेस में यहाँ चार्ज डिवाइड हो गए, फिर यहाँ जाके कंबाइन हो गए. नाउ दीज कैपेसिटर आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. इफ दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स C4 and C net are in parallel combination. That means C total, C equivalent, you are going to calculate C equivalent is equal to C net plus C4, which is having value 1 microfarad plus 2 microfarad. That means it is having value 3 microfarad. So the net capacitance of this capacitor is this circuit is 3 microfarad. I will take you to the fast forward solution. So look at this fast forward solution. So students, we are having another question, and this is a circuit in first of all, I will take you to the fast forward solution. So that fast forward solution is, look at this. Those who didn't got the fast forward solution, I will explain this question. So I will look at this circuit. Now this charge is flowing from A, and from going A to this point, charge is having three parts. One is this, and one is this. So it will get divided into three parts, and this point is called junction. So this charge which is going in this direction will follow this path and will come to this point. The charge going from this point will follow this path and come to this point, and they will combine at this point. So this junction I will name it as J1, and this junction I will name it as J2, and both of these charges will get combined here and will reach to this point. At this point, this charge will also get combined, and we will having junction J3, and these charges will come out of this. So first of all, we will calculate the equivalent capacitance or net capacitance for this branch. So for this branch, you can find this that the charge started from this point, gets undivided, and passing through this capacitor and this capacitor, it reaches to this point. It reached to this point without getting divided anywhere. So these capacitor will be in series combination. So if they are in series combination, then they will be added series in the series combination, that is 1 by 10 plus 1 by 10, that is 5 microfarad. It will be the answer. So it will be 5 microfarad. So I can write it as I didn't name that capacitor. So if I write it as C1, C2, C3, C4, and that was of C5. Now these capacitors are in series combination, so I can write it as C4 and C5 are in series combination, are in series. So C net I am writing directly, but you have to solve. So C net is 5 microfarad. Okay, now
Now, this branch and this branch consist of only one capacitor, and those capacitors will be added in parallel combination. So C3 and I will name it this capacitor as C4 C5. C4 C5 are in parallel combination. So they are having value C net of these two branches will be equal to 5 plus 5, 10 microfarad. So we are left with these capacitors only, and the net capacitance of this is 10 microfarad. Now C2 and this net C net, I will name it as C net are in parallel combination. So C net and C2 are again in parallel combination. So the net capacitance will be C net dash will be equal to 20 microfarad. So I am having two capacitors now. One is having 5 microfarad, another is having 20 microfarad. Charge goes from here to here. Does it get divided? No. So they will be added in parallel series combination. So C1 and C net double dash are in parallel combination. So are in series combination. So we will be having answer that is 4 microfarad. You have to solve it and show in your notebook, either in the classwork notebook or in the examination answer sheet. This is the equivalent capacitance of this circuit. Now we are left with only one capacitor, that is 4 microfarad. Now find the total charge of the circuit. I am going to calculate the total charge of the circuit. So we knows that Q is equal to CV. This is the very versatile relation. You have to remember this. So Q, I will find QC is 4 microfarad, means 10 to the power minus 6, and V is 100 volt. So the answer will be 4 into 10 to the power minus 4 coulomb. ये क्वेश्चन है आपके पास, एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें ये C1 है 8 माइक्रोफैरेड, C2, C3, C4, C5, C6, C7. आपको नेट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन A एंड V, एंड यू आर गिवन वोल्टेज इज इक्वल टू 100 वोल्ट. मतलब A और B के जो बीच का वोल्टेज है दैट इज 100 वोल्ट. यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द चार्ज. तो सबसे पहले फास्ट फॉरवर्ड सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का, मजा आएगा. देखिए सो स्टूडेंट्स, आपने फास्ट फॉरवर्डिंग में देख लिया सॉल्यूशन कैसे हुआ है. जिनको नहीं समझ में आया वो सॉल्यूशन देख लें. अब देखिए आपके पास यहाँ से सबसे पहले चार्ज का फ्लो बना लीजिए आप. तो चार्ज यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे दो पॉइंट्स पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. जहाँ डिवाइड हुआ मैं उसको जंक्शन बोलता हूँ, तो ये हो गया जंक्शन 1. ठीक है, ये जो डिवाइडेड चार्ज है ये वाला पार्ट यहाँ पे जाके फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसको बोल देंगे जंक्शन 2. ये वाला चार्ज यहाँ पे डिवाइड हो गया तो अगेन इस वाले जंक्शन को नाम दे देंगे जंक्शन 3. ये वाला चार्ज जो यहाँ डिवाइड हुआ था ये इस पॉइंट पे आके वापस से कंबाइन हो गया, इसको हमने बोल दिया जंक्शन 3 डैश. ठीक है, और ये जो जंक्शन 2 का चार्ज था जो यहाँ से यहाँ आया इस वाले पॉइंट पे, इसको बोल देंगे जंक्शन 2 डैश. ये जो कंप्लीट चार्ज जो डिवाइड हुआ था इस वाले पॉइंट पे कंबाइन हो गया कंप्लीट चार्ज यहाँ पे, इसको हम बोल देंगे जंक्शन 1 डैश.
तो आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमेशा याद रखिए कि स्मॉलर जंक्शन से शुरुआत कीजिए। यहाँ पे आपको दो स्मॉलर जंक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला, ये वाला जंक्शन है और एक ये वाला है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, दोनों में से कोई भी पहले सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं J3 से। तो देखिए ये J3 से चार्ज डिवाइड होकर यहाँ से यहाँ गया है, यहाँ से यहाँ चार्ज डिवाइड होता है, तो इसको हम बोलते हैं कि कैपेसिटर्स पैरेलल में है, तो दोनों हमेशा डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। तो इसको हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका क्या, C3C4 विच इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड प्लस 2 माइक्रोफैरेड, तो ये हो गया 4 माइक्रोफैरेड। सिमिलरली ये C5, ये चार्ज जो यहाँ से डिवाइड हुआ था वो यहाँ से यहाँ गया है, लेकिन इन दोनों के बीच में चार्ज कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है। चार्ज डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में है, तो इसको हमने नाम दे दिया क्या, एक ही कैपेसिटर ये दोनों क्रिएट कर देंगे, तो ये हो गया आपका C5C6 इज इक्वल टू C5C6 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैरेड। अब देखिए ये 4 माइक्रोफैरेड और ये माइक्रोफैरेड चार्ज डिवाइड हुआ है, इस वाले पॉइंट पे कंबाइन हुआ है, इस वाले पॉइंट पे दोनों के बीच में एक एक कैपेसिटर है पैरेलल में, दोनों ब्रांचेस में, तो दोनों पैरेलल में ऐड हो जाएंगे और पैरेलल में डायरेक्टली ऐड होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका C7C6C5 विच इज इक्वल टू 8 माइक्रोफैरेड। अब देखिए यहाँ पे चार्ज यहाँ से गया है, यहाँ से ये, और ये चार्ज यहाँ से गया है, तो जब भी ब्रांचेस की बात आती है तो ब्रांचेस में हमेशा आप इंडिविजुअल ब्रांचेस में सीरीज पहले सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों का सीरीज पहले सॉल्व कर लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा सी नेट। अब नाम दे देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे आपको सिंबल बढ़ाने पड़ जाएंगे। सी नेट विल बी इक्वल टू 8 माइक्रोफैरेड ये था और 8 ये था, तो ये हो गया 4 माइक्रोफैरेड। अब देखिए यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर नहीं बचा। अब यहाँ पे दो कैपेसिटर है, एक ये है और एक ये है, दोनों कैपेसिटर्स को आप देख रहे हैं कि चार्ज यहाँ डिवाइड हुआ है, यहाँ कंबाइन हो गया आके, तो दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों को आपने नाम दे दिया क्या, ये दोनों पैरेलल में ऐड हो जाएंगे, और पैरेलल में ऐड होने के बाद दिस इज सी नेट डैश विच इज इक्वल टू 8 माइक्रोफैरेड, और ये 8 माइक्रोफैरेड और 8 माइक्रोफैरेड दोनों सीरीज में है, तो आपके पास C इक्विवेलेंट जो आ जाएगा दैट इज 4 माइक्रोफैरेड। 1/8 प्लस 1/8, तो ये हो जाएगा 1/4 विच इज 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, आपको थ्योरी के साथ लिखना होता है दैट दीज कैपेसिटर्स हैव इन पैरेलल सो दे विल ऐड लाइक दिस। आपको थ्योरी के साथ लिखना होता है, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है इसको। नाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द चार्ज, सो Q इज इक्वल टू CV होता है, Q इज इक्वल टू C आपका आया है 4 माइक्रोफैरेड और V है आपका 100 वोल्ट। 4 माइक्रोफैरेड का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ फैरेड इंटू 100 विच कैन बी रिटन एज 4 इंटू 10⁻⁻⁻